Hello friends and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So how's your preparation going for your NEET examinations? I hope you all are preparing very well. So this video is basically for NEET aspirants जो भी students NEET examinations की preparation कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही informational होने वाला है because we are going to discuss what are the methods you should use at present time to increase your revision speed. So अब ये जो लास्ट मोमेंट का टाइम है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करें अपना रिवीजन करने के लिए. देयर आर मोर मेथड्स जो कि ईजी वे में कम टाइम में आपका रिवीजन करा सकते हैं एंड दैट टू इन अ इंटरैक्टिव मैनर. सो यू डोंट जस्ट फील द स्ट्रेस ऑफ एजुकेशन और स्ट्रेस ऑफ द एग्ज़ाम और आप लाइट वे में अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो. जैसा कि आप देख रहे हैं edurify.com हमारी वेबसाइट जिस पे हम डेली मॉक टेस्ट का रिवीजन करते हैं, नीट एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपना ऑनलाइन स्कोर चेक करते हैं. चलते हैं नीट एग्ज़ाम की तरफ. जिसने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट फर्दर हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड आप इजीली एक्सेस कर सकें. आज हम बात कर रहे थे मेथड्स की जो कि आपका रिवीजन स्मूथ वे में और बहुत जल्दी स्पीड में करा सकते हैं. फर्स्ट इज concept card. This is the new way of doing revision. You should definitely try concept cards and revise. Firstly, we will choose our subject. Suppose we say it's physics, and then we have to choose the chapter. We say laws of motion. These are the tests. We'll take one and see how we can do revision with the flashcards in an interactive and speedy manner. Law of motions, there will be 10 questions. Let's begin. First question is, for a rocket moving in free space, the fraction of mass to be disposed of to attain a speed equal to 2 times the exhaust speed is given by E2 is equals to 7.4. These are the 4 possible answers. You can see कौन सा आंसर करेक्ट है. You just simply click and press OK and now check your answer. The fourth answer is right. Now we move to next question. The length of a spring is L2, L1 when stretched with a force of 4N and 5N respectively. Its natural length is 1, 2, 3 and 4. Whatever is the right, simply choose, press OK and then see. Third was the correct answer. Comes the third question. This way you have to attempt all the 10 questions in this flashcard and you can revise your particular chapter. इस वे में आपका एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आपको लगा भी नहीं कि आपने रिवीजन किया. ये सब चीज़ें आप हमारे ऐप पे भी देख सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको ईजिली मिल जाएगी. सिंपल टाइप करिए एड्यूरीफाई द लर्निंग ऐप. You will get it there, download, install on your mobile phones and start flashcard feature, interactive quiz feature for your NEET exam revision. This will be going to save your time and provide you interactive way of doing revision. You won't be feeling any stress for your examination and speedily आपका रिवीजन हो जाएगा. Edurify करो, पढ़ाई करो. Thank you.